Hello students, welcome back. We will continue our previous topic, application of derivatives. Today we are going to see the application derivative as a rate measure. It means we are going to see the problems related to rate measure. Okay, exercise same. Now see the question. A particle moves along the curve. Equation of curve is given. 6y is equal to x cube plus 2. We have to find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. This is the given condition. Y coordinate changes 8 times as its x coordinate. Now see, let p of x1 y1 be any point on the equation of curve. What is the equation of curve? 6y is equal to x cube plus 2. This is the equation of curve. Okay, write down the given condition. This condition is given according to condition. According to condition. क्या condition? Since y coordinate changes 8 times its x coordinate. Change in y is dy by dt. Change in x is dx by dt. Y coordinate changes means dy by dt equal to 8 times its change in x coordinate, that is 8 into dx by dt. Therefore dy by dt is equal to 8 times dx by dt at point x1 y1. This condition is given to us and we have to find the points. Points आपको find करना है, ये condition question में given है. Okay, write down the equation of curve. Curve से equation से क्या मिलेगा आपको? उसको differentiate करो, dy by dx मिलेगा. dy by dt मिलेगा, differentiating with respect to t. So write down the equation of curve, that is 6y is equal to x cube plus 2. Now this differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. क्या है इसका डेरिवेटिव? 6 डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t. y का डेरिवेटिव with respect to t dy by dt. x क्यूब का डेरिवेटिव x raised to n का डेरिवेटिव nx raised to n minus 1. In the similar manner x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x square into derivative of x with respect to t, because we are differentiating with respect to t. So x का डेरिवेटिव with respect to t आएगा dx by dt plus 2 constant है, dy by dt of 2. Derivative of 2 is 0 because 2 is constant. So therefore dy by dt क्या आएगा? dy by dt equal to 3x square upon 6 into dx by dt. Okay, from the given equation 1, dy by dt is equal to, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, dy by dt at point x1 y1 is equal to 3x square. 3 2s are 6. X square upon 2. X square upon 2 into dx by dt at point x1 y1. Okay, dy by dt का वैल्यू पुट कीजिए 8 times dx by dt. तो यह 8 times dx by dt is equal to x square upon 2 into dx by dt. dx by dt को रिमूव करो दोनों साइड से, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 8 2s are 16 equal to x square. x square equal to 16. x square तो x is equal to क्या आएगा? Plus minus 4. You will get the two values of x. x की दो वैल्यूज है तो y की भी दो वैल्यूज आएगी. When x is equal to 4, put x equal to 4 in the equation of curve. 6y equal to x का क्यूब means 4 क्यूब plus 2. 4 का क्यूब आएगा 64 plus 2. तो ये होगा 66. 6y equal to 66. Therefore y equal to 11. तो फर्स्ट पॉइंट आया 4 11. When y equal to minus 4, minus 4 पुट के तो क्या आएगा? 6y equal to
-4 का क्यूब प्लस 2। -4 का क्यूब क्या आएगा? -64 प्लस 2, तो 6y इक्वल टू आएगा -64 प्लस 2 इज -62, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? -62 अपॉन 6, इसको डिवाइड करो, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 1 are 2, तो y इज इक्वल टू आएगा -31 अपॉन 3, तो पॉइंट आएगा -4 -31 upon 2. We'll get the 2 points. 4 11 -4 -31 upon 3. These are the 2 point points. Isn't it? Any doubt regarding to this? Okay, now we take the next one. Second question. Now see the second question. A spherical soap bubble is expanding. Question: a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing, at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing where its radius is 5 centimeter. When its radius is 5 centimeter. Okay, this is the question. This question is given. Okay, now see. Read the question carefully. A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. Suppose radius is r at any time t. Radius is r. Change in radius. So change in radius क्या होगा? At any time t is dr by dt. It means we have given that dr by dt is 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing? We have to find the rate of change in surface area. We are using notation S for the surface area of the spherical soap bubble. Radius is given. Okay. So write down let R be the radius. And capital S be the surface area इसका of spherical soap bubble at any time. R be the radius and capital S be the surface area of the spherical soap bubble at time t. Okay, now what is given? Change in radius. Radius is also given. Radius is 5 centimeter. Change in radius is also given.
dr by dt is also given, that is 0.02 centimeter per second. Okay, we have to find the rate of change in surface area. इसका मतलब आपको फाइंड करना है ds by dt. उसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. Which formula is applicable here? The surface area of the spherical soap bubble. क्या फॉर्मूला है? That is S is equal to 4 pi r square. Okay. The surface area of spherical soap bubble is capital S is equal to 4 pi r square. अभी आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया. ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा? ds by dt. 4 pi कांस्टेंट है, मल्टीपल में तो आउटसाइड में होगी. डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी. r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r. Derivative of r with respect to t is dr by dt. तो क्या आएगा? 4 into 2 8 pi r dr by dt. ओके, अभी वैल्यूज कीजिए r and dr by dt. r equal to 5 centimeter, dr by dt 0.02. तो ds by dt आएगा, ds by dt क्या आएगा? 8 pi, r का वैल्यू है 5 और dr by dt है 0.02. क्या आएगा? 5 to the 10, 8 by the 40, 40 into 80, 0.80 pi. यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सपोज व्हेन pi is equal to, सपोज ये आपने 3.14, तो क्या आएगा? ds by dt is equal to क्या आएगा? 0.80 into 3.14. तो क्या आएगा? 8 4s are 32, 11, 8 is 24, 25. ये आएगा 2.51 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दिस इज आल्सो ds by dt. तो ये लिखो या तो ए लिखो. पाई का वैल्यू लिखो या तो ये आंसर आएगा 0.80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और पाई को 3.14 लिया तो आएगा आंसर 2.512 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. इजंट इट? चलिए वन मोर सम लेते जरा, सिंपल सम. थर्ड वन. छोटा सा है. If the line y equal to 4x minus 5, if the line y equal to 4x minus 5 touches the curve, touches the curve y equal to ax cube plus b, y square equal to ax cube plus b at the point 2 3, at the point 2 comma 3 find a and b, find a and b. Okay, I think this question is related to the tangent and normal because equation of line is given, equation of curve is given. कर्व की इक्वेशन से डिवाइड बाय ds फाइंड करो, दैट इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट. लाइन का स्लोप फाइंड करो, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 3. दोनों का इक्वालिटी करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड देन पुट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t. ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है कर्व का इक्वेशन?
y square equal to ax cube plus b. Okay, now differentiate this equation with respect to x. Differentiate with respect to x. Y square का derivative 2y into derivative of y with respect to x is divided by dx. A x cube का derivative क्या आएगा 3x square plus b का derivative आएगा 0. तो dy by dx क्या आएगा 3ax square upon 2y. This is your dy by dx. So slope of tangent at 2, 3 is equal to 3ax square upon 2y. Say this equation 1. Now equation of line is क्या line का equation y is equal to 4x minus 5. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा इसका स्लोप क्या आएगा दिस इज 4x minus 5 equal to 0 तो ये आएगा minus 4 upon minus 1 तो ये आएगा minus 4. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट at 2, 3 ये क्या आएगा minus 4. से इक्वेशन दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम 1 and 2 okay from 1 and 2 कंपैरिजन कीजिए 3ax square upon 2y is equal to minus 4. Okay, at point 2, 3 put x is equal to 2 y equal to 3 तो क्या होगा 3a x का वैल्यू 2 plus square 2 y का वैल्यू 3 is equal to minus 4 2 square is 4 12a upon 3 to the 6 is equal to minus 4 6 into minus 4 12a equal to minus 24 therefore a equal to minus 2. Okay, now since the point 2, 3 lies on the curve, since point 2, 3 lies on the curve, क्या है curve का equation y equal to ax cube plus y square equal to ax cube plus b. तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए तो क्या आएगा y square 3 square a का वैल्यू minus 2 x is 2 cube plus b. तो ये आएगा इक्वेशन 9 is equal to 2 cube is 8 into 2 minus 2 minus 16 plus b. 2 cube is ax cube. Okay, a का वैल्यू minus 2 cube is 8 into minus 2 16 minus 16 तो b is equal to आएगा 16 plus 9 that is 25. तो b equal to आएगा 25. a is minus 2 b is equal to 25. You can check it. पहले इक्वेशन का क्या लिखा है y square is equal to ax cube plus b. डिफरेंशिएट किया y square का डेरिवेटिव 2y into dy by dx. इसको डिफरेंशिएट किया x cube का डेरिवेटिव dx square. यहाँ से मिला आपको dy by dx 3ax square upon 2y. Slope of tangent at 2, 3 is 3ax square upon 2y at point 2, 3. Okay. Now equation of line is y equal to 4x minus 5. तो ये इक्वेशन होगा 4x minus y minus 5 equal to 0. तो इसका इक्वेशन होगा स्लोप माइनस a अपॉन माइनस b. ये इक्वेशन होगा 4x minus y minus 5 equal to 0. तो इसका स्लोप आएगा 4 minus 4 अपॉन माइनस 1 तो ये आएगा प्लस 5. तो ये स्लोप हुआ 4 तो ये भी स्लोप आएगा प्लस 4 ये भी स्लोप होगा प्लस 4 ये भी होगा प्लस 4
6 4 are 22, 24. तो a का वैल्यू होगा 2, a का वैल्यू 2 पुट करो तो ये आएगा 2, 2 क्यूब इज 8, 8 into 2 आएगा 16, 9 equal to 16 plus b, तो b equal to आएगा 9 minus 16, that is b का वैल्यू क्या होगा -7, b equal to -7, a equal to 2, b equal to -7. ओके, स्लोप हमने राउंड लिखा था, स्लोप आएगा +4, दोनों का इक्वालिटी करो, y x y का वैल्यू पुट करो, x equal to y equal to, okay, this question is related to tangent and normal. Okay, see you, we will continue in the next lecture.